Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter International Organizations, and under this chapter we have discussed about the evolution of the UN, how the UN came into existence, the important conferences we have discussed about, and then we have also discussed about the this principal organs of the United Nations organization, and we have seen that the main aim of United Nations is to promote international peace and security. And other than this, the UNO has also aimed to solve the problem of economic and social development, because they become the most important reason for war. So in this way, the main aim of the UNO is to promote international peace and security, is to bring social and economic development in the whole world. And now we will see the total membership of United Nations organization. In the year 2011, we can say there are 193 members of the UN. All the sovereign countries are the members of the UN, and these all countries get representation in General Assembly. They all are members of the General Assembly, where all are having one vote, which have same value. And then we have seen the Security Council. In Security Council there are 15 members, 5 are permanent and 10 are temporary or non-permanent members who are elected for 2 years. And we can also say why only these 5 countries, like the United Kingdom, Russia, United States, France and China, why only these 5 countries were given permanent seat in the United Nations Security Council? What is the reason behind giving only these 5 countries the permanent seat? The reason was that these states were the most powerful country immediately after the Second World War. When the UNO came into existence, at that time these 5 countries were the most powerful, and they were victorious in the war. These were the powers, allied powers, and these allied powers became victorious in the war. So they were given permanent seat in the Security Council. And we will see the present Secretary General of United Nations. At present, the Secretary General of United Nations is Antonio Guterres. Antonio Guterres. He is the present Secretary General of UN, and he was elected in the year 2017, and he is the 9th Secretary General of the UN. Before becoming Secretary General of the UN, he was the Prime Minister of Portugal in the from the year 1995 to 2002. And he was also UN High Commissioner for Refugees from year 2005 to 2014. So this is about the present Secretary General of the UN. And now we will see that the 2 organs, Security Council and General Assembly, these 2 organs are related to the matters of war and peace, and whatever differences is occurring between member states, all these are discussed in the General Assembly and Security Council. But other than these issues of war and peace and the differences between member states, there are many social and economic issues which are also a very important jurisdiction of the UN. And in this direction we see that there are many specialized agencies of the UN which
work in this direction, like WHO, World Health Organization, then United Nations Development Program, UNDP, then UNHRC, United Nations Human Rights Commission, then UNHCR, United Nations High Commission for Refugee, then UNICEF is also there, which works for children, like in the full form of UNICEF is United Nations Children's Fund. In the same way, UNESCO is there, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. So these are specialized agencies are there for functioning of the economic and social work of the UN. So UN is like this. We have discussed about UN. Now we will see that what we know, reforms are very important for any organization, for any thing which need to be survived. अगर किसी को भी survive करना है तो reforms बहुत important होते हैं. We can say change is the only constant. Change is the only constant. Change होना एकदम important हो जाता है if we want to survive. And in this connection we will see that the UN is also not an exception. There is demand from various sections to reform the UN, especially after the end of the Cold War, because we have seen the bipolar world has turned to unipolar world, and now USSR is not there, only America is there, the hegemony of America is established. So in this changed scenario there is demand for reform of the UN. And in this regard we will see that there are two kinds of reform about which demand is done. Two kinds of reforms. Two kinds of reforms are there. The first is the reform of the organization's structure and process. जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उस पर चेंज करने की बात की जा रही है, उसको रिफॉर्म करने की बात की जा रही है, और उसकी जो प्रोसेस है उसको रिफॉर्म करने की बात की जा रही है. तो द फर्स्ट इज द डिमांड टू रिफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस. Reform the structure and process of the मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेस है उसमें चेंजेस आना चाहिए. एंड द नेक्स्ट काइंड ऑफ डिमांड इज डिमांड फॉर रिफॉर्म इज द रिफॉर्म इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो हमारी यूएनओ है उसके जो जुरिस्डिक्शन है उसमें चेंजेस आना चाहिए. जुरिस्डिक्शन ऑफ द Okay, so these two types of demand is there regarding the reform. अगर reform लाना है तो इन दोनों चीज़ों में ही reform लाने की जरूरत है. Everyone has agreed upon this कि yes, there is need to reform the structure and process of the organization. There is need to reform the jurisdiction of the UN. But there is lack of consensus regarding what kind of reform is required. कैसे रिफॉर्म लाया जाए, क्या रिफॉर्म लाया जाए और कैसे किया जाए. मतलब ये एवरीवन इज एक्सेप्टिंग यस देयर इज नीड टू रिफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन, बट कैसे किया जाए इसको, क्या क्या एग्जैक्टली क्या रिफॉर्म्स लाए जाए, ये सब कुछ चीजें जो हैं उसको लेकर के काफी ज्यादा वी कैन से कि लैक ऑफ कंसेंसस इज देयर. And we see when there is talk of reforms of structure and processes,
the biggest discussion is regarding the Security Council. Whenever we talk of reform in the United Nations, actually we are talking about the reform in the Security Council. And we see that the most important demand regarding this Security Council is to increase the number of permanent members in the UN Security Council. Not only the number of permanent members, but the number of non-permanent members should also be increased. This is also the demand कि परमानेंट मेंबर्स को तो बढ़ाना ही चाहिए, नॉन परमानेंट मेंबर्स की भी नंबर बढ़नी चाहिए. एंड व्हाई दिस डिमांड इज देयर? बिकॉज इट इज सेड दैट the realities of the contemporary world politics are changing, and the contemporary world politics are changing, so the organization should also change. And we see that there is demand to increase membership from particular continents like Asia, Africa, South America. It is said that these continents are not properly represented in the United Nations Security Council, so there is need to give representation to these continents. And beyond this, US and other Western countries, they want that some improvements should be done in the budgetary procedure and administration. Their demand is this also regarding the reform of the Security Council. So this is regarding the first topic, the first point about which we have discussed कि कौन से रिफॉर्म लाने की बात हो रही है. अगर हम कह रहे हैं कि उसके प्रोसेस और स्ट्रक्चर में रिफॉर्म लाना है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? उसके प्रोसेस और स्ट्रक्चर में रिफॉर्म लाने का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी काउंसिल ओनली, कि सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर का नंबर बढ़ाना है. नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज रिफॉर्म इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द UN. Regarding this jurisdiction of the UN, there are difference of opinion. Like some are of the opinion that the UN should have more power. It should play a greater role. It should play an more effective role in peace and security mission. Whatever it is doing for maintaining international peace and security, that is not sufficient. It needs to be more powerful in order to bring peace and security in the world. So some are of this opinion, but there are many who are of the opinion that the UN should have more jurisdiction regarding the developmental and humanitarian work. UN should not be involved should be more involved with these subjects like health, education, environment, population control, human rights, gender, social justice. These are the important social and economic issues which needs to be in focus, which needs to be in the jurisdiction of the UN. So this is the controversy regarding the reform. ये पहले तो दो तरह के डिमांड्स आ रहे हैं, और इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो जुरिस्डिक्शन को लेकर के जो डिमांड्स हैं वो डिफरेंट है. So in this chapter we will discuss all both these types of reforms which is aimed at reforming the UNO. But our more stress will be on the reform of structure and process. This will be under more, we will discuss it in more detail. So what we find, the UN was established in the year 1945. Immediately after the Second World War. We have seen that the process of making of UN actually started during the Second World War, and it was established on 24th October 1945. And what we find today we are in 2020, and it was established in the year 1945. So what we see that a very important changes, very substantial changes
have occurred in world politics from 1945 to 2020. अगर हम इस टाइम स्पैन को देखें तो हमें यही हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इस दौरान में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं. एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या जरूरी है कि हम ये देखें कि जो चेंजेस आए हैं वो उसके अकॉर्डिंगली यूएन जो है वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया. सर्कमस्टांसेस बदल गए. जिस सर्कमस्टांस में यूएन इस्टेब्लिश हुआ था और अब की जो सर्कमस्टांस है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए, बहुत सब्सटेंशियल चेंजेस आ गए. स्टिल द यूएन इज सेम. तो दैट इज वाई देयर इज डिमांड ऑफ रिफॉर्म, क्योंकि when circumstances are changing, then there is need to change the organization also. Otherwise, the organization will become irrelevant. इसलिए इसकी डिमांड की जाती है कि रिफॉर्म लाई जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ we will see what changes have occurred in the world politics since 1945. So in this connection, we will see the first and the most important change that occurred in the world politics is the collapse of Soviet Union. USSR is no more. The world was turned bipolar after the Second World War. The world turned bipolar, and these two poles were represented by USA and USSR, and these two countries were the superpowers. Not only they were superpowers, but there was ideological differences also there between the two countries. The one US bloc was representing the capitalist economy, the USSR bloc was representing the socialist economy. And there started the Cold War, because both the superpowers were having almost equal powers in all the aspects, like military aspect or technological aspect or economic aspect or political aspect. In all aspects they were having similar power, and they were having ideological differences. So this led to the starting of the Cold War. But what we find in the year 1991, USSR was collapsed, and with the collapse of USSR, Cold War came to an end. After the collapse of the USSR, the US remained the only power, and we see that the world changed from bipolar to unipolar, and in this unipolar world there is a hegemony of America, and this is US is the strongest power. And what we find that after the collapse of the USSR, Russia became the successor of erstwhile USSR. Everything was given to Russia, the permanent membership and all the liabilities and everything, everything was given to Russia as successor of USSR. Now what we find that the relationship between Russia and the US is improving. We can't say that still they are behaving like enemies. Animosity is not there, hostility is not there. They are cooperating with each other, and the scenario of the world politics is changing a lot. Not only this, we see that China is fast emerging as a great power. Its economy is growing at a very high rate, and China is now considered to be as a new center of power. Not only China, but India has also increased its power. India has also become very powerful if we see the economic aspect, if we see the military aspect, if we see the technological aspect. From all these point of view, India is also now considered as a new center of power. And these are the changes which are coming, which we are experiencing in present time. Not only this, many new countries have emerged after the end of the USSR,
there were 15 republics in the USSR, and when the USSR was disintegrated, these 15 republics became independent countries. And after becoming independent, these all countries joined the UN. So what we find that the many new countries have joined the UN, and the membership of UN has increased. And not only this, we find that nowadays the UN is also facing new type of challenges. So new challenges to security is emerged, like genocide, civil war, ethnic conflict. These are the new challenges which were not there at when this UN was established in the after the end of the Second World War. At that time, these challenges were not that prominent. आज टेररिज्म की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, एपिडेमिक्स आ रहे हैं, पैंडेमिक्स आ रहे हैं. तो पूरी जो दुनिया है उसकी जो अगर हम देखें तो सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत इंक्रीज कर गए हैं, एंड जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. स्पेशली आफ्टर 1991 वी सी कि जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत तेजी से बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है, और ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसके कारण जो इंटरकनेक्टिविटी है वो बढ़ गई है. तो ये सारी चीज़ें जो है, ऑल दीज चेंजेस हैव अकर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. एंड व्हाट वी नीड कि इस तरह की सिचुएशन में, जबकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इतने सारे ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं और कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, हर कुछ जो है वो बदल चुका है, और आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि यूएन जो है उसके वो कहीं ना कहीं इररेलेवेंट दिख रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज्ड सर्कमस्टांसेस. सो वी कैन से द क्वेश्चन फेसिंग द वर्ल्ड इज द यूएन डूइंग एनफ? इज इट इक्विप्ड टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड? व्हाट शुड इट बी डूइंग and how? So there is need to reform the UN so that it can remain relevant. इसको irrelevant नहीं होना है, इसको relevant बने रहना है. अगर तो ये बहुत ज़्यादा important है कि इसमें changes लाए जाए. अगर changes नहीं आते हैं, if changes are not brought, then it may become irrelevant, or it may become ineffective also. So there is need to reform the United Nations organization. And now we will focus on the reform of structures and processes. Reform of structures and processes. Okay, so we see that there is a demand to reform the UN. So there is need to reform the structure and processes of the United Nations. That is the we can say there is need to reform the United Nations Security Council. But what should be done? It is not clear, because there is a lot of views and lot of confusion. So what we see that in the year 1992, the General Assembly of the United Nations adopted a resolution, and in this resolution three main complaints are reflected कि कौन सी complaints है, क्यों हमें यूएन में क्या चेंजेस लाने की नीड है. सो द फर्स्ट कंप्लेंट वाज कि द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज. जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज है वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, because it is still representing the realities of the world politics after the Second World War. Whatever जो भी उस समय की world politics थी, जो realities थी, ये उसी को reflect कर रहा है. जो कुछ भी changes, just now we have discussed the changes,
जो भी चेंजेस आए हैं उसको ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें चेंजेस लाए जाए ताकि ये जो भी चेंजेस आए हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उसके अकॉर्डिंगली इसको देखा जा सके। देन द सेकेंड कंप्लेंट इज कि इट्स डिसीजन रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट एंड आर डोमिनेटेड बाय अ फ्यू पावर। यू कैन जस्ट सी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर वेस्टर्न कंट्रीज लाइक US, then UK, Britain, UK, France, all these are Western countries. So the whole value which is reflected by the UN is Western value and Western interest, and it is dominated by few powers. Very few powers are there who is dominating the UN. जबकि अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत सारे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर हो गए। जैसे हमने कहा, चाइना इमर्ज्ड एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, इंडिया इमर्ज्ड एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, इजराइल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। तो इतने सारे जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर बन गए, बट दे आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन द UN. सो दिस इज रिक्वायर्ड कि उनको रिप्रेजेंटेशन जो है वो सही ढंग से मिलनी चाहिए। और एंड इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट देयर, बिकॉज अगर हम देखें तो जो UN है उसके अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल, वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी काउंसिल ओनली बिकॉज जनरल असेंबली में तो सबका बराबर रिप्रेजेंटेशन है। ऑल द कंट्रीज आर हैविंग one representative and one person, one country, one vote, one value is there. But if we see Security Council, in Security Council there is lack of equitable representation. Equitable representation नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट्स है जिनका की रिप्रेजेंटेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है ही नहीं। लाइक साउथ अमेरिका, नो कंट्री इज रिप्रेजेंटेड इन द सिक्योरिटी काउंसिल। देन अफ्रीका, नो कंट्री इज रिप्रेजेंटेड इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये जो हमें देखने को मिल रहा है, इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं होना चाहिए। एंड मोर ओवर एशिया जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट से ओनली वन चाइना इज देयर एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एशिया। तो एशिया से भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चीजें जो हैं, ये डिमांड्स हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्विटेबल नहीं है। सो इस तरह के जो ग्रोइंग डिमांड हो रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए UN को, इसको देखते हुए क्या हुआ कि 1 जनवरी 1997 ऑन 1 जनवरी 1997 UN के उस समय सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अन्नान। Kofi Annan was the Secretary General of the UN and he started an inquiry. Okay, the inquiry was regarding how to reform the UN. किस तरह से UN का रिफॉर्म होना चाहिए। एंड सिक्योरिटी काउंसिल में अगर मेंबर्स बढ़ाने हैं तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ऑन व्हाट क्राइटेरिया द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शुड बी गिवन टू द कंट्रीज। तो इसके लिए उन्होंने काफी डिटेल्ड में एक अपना प्रपोजल प्रिपेयर किया और जिसमें कि बहुत सारी क्राइटेरिया दिए गए हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कोई कंट्री यूएनओ का परमानेंट मेंबर बने तो उसके लिए उसको कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए। लाइक जो पहली बात कही गई है इनके प्रपोजल में, उसमें ये है कि द कंट्री शुड बी अ मेजर इकोनॉमिक पावर। उनकी इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, मेजर इकोनॉमिक पावर की तरह से उनको कंसिडर किया जाना चाहिए। देन सेकेंड क्राइटेरिया है कि वो एक मेजर मिलिट्री पावर हो, न सिर्फ इकोनॉमिक पावर बट उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। देन ओनली दैट द कंट्री कैन बी कंसिडर्ड फॉर द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। देन यूएन के बजट में भी उसका कंट्रीब्यूशन सब्सटैंशियल होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, बिकॉज इफ यू वांट टू बी द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल देन you must pay substantial part in the budget of the UN. And then we see that a nation
that respect democracy and human rights that should be given place in the permanent membership of the UNSC. ये नहीं कि जिस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, मिलिट्री रूल है एंड ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं, जेनोसाइड हो रहे हैं, उस तरह की कंट्री को हम परमानेंट मेंबरशिप नहीं दे सकते हैं. देन अ कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज रिक्वायर्ड कि जो कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेगी, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, लाइक हमने अभी कॉन्टिनेंट्स की बात की थी तो वो जियोग्राफी वही कॉन्टिनेंट्स वाली बात हुई. देन इकोनॉमिक सिस्टम लाइक कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको रिप्रेजेंट करने वाले कंट्रीज होनी चाहिए. देन कल्चर जो है, डिफरेंट कल्चर्स है, उसको रिप्रेजेंट करने वाली कंट्री होनी चाहिए, ताकि द यूएनओ शुड नॉट बी डोमिनेटेड बाय फ्यू कंट्रीज. इट शुड नॉट बी डोमिनेटेड बाय ओनली सिंगल कल्चर और ओनली सिंगल आइडियोलॉजी, बट it should be given all the important जो भी आइडियोलॉजीज हैं, जो भी important cultures हैं, उन सबको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए. दिस इज द these are the criteria which are set by Kofi Annan कि अगर परमानेंट मेंबरशिप चाहिए तो उसके लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए. So we will discuss what are the problems associated with this criteria which is set by Kofi Annan, and we will discuss the matter in the next class.